अच्छा था और उसका जो फ्लो था वो भी बहुत तेज़ था, तो थोड़ी चैलेंजेस थे, पर ऑफ कोर्स एज आर्मी वी हैव ओवरकम दोस चैलेंजेस एंड सक्सेसफुली मेड अ बंड, जिसके कारण अभी पानी सिटी की तरफ एटलीस्ट इस तरफ से तो नहीं जा रहा है। एंड अभी आप देख सकते हैं कि बैक फ्लो जो नॉर्मल फ्लो है जो ड्रेनेज का बैक टू यमुना वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। सर क्या यहाँ पे जो वाटर इतना ज़्यादा प्रेशर था उसमें जो छोटा सा बांध बनाने का उसको भी तोड़ दिया था यहाँ पे? जी वही था इशू दैट यहाँ पर एक बंड था वो टूट गया और जो पानी का पूरा प्रेशर है दैट हिट दी स्लुइस गेट्स एंड बिकॉज इट कुडंट टेक द प्रेशर मे बी, सो वो भी थोड़ा डैमेज हुआ था। तभी हम लोग आए हैं। अभी हमें ऐसे कंडीशन कर दिया है कि पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अभी उसका रिपेयर काम कर सकते हैं। तो अभी किस तरह का काम यहाँ पे आगे चलना है थोड़ा सा अगर बता सकें तो? जी अभी सिंस हमने एक बंड बना के पानी का प्रवाह को रोक दिया है, अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर आ चुकी है। वो आई बीम लगा के जो स्लुइस वाला एरिया है उसको वो चैनलाइज करेंगे ताकि फ्लो ऑफ द वाटर कैन बी रेगुलेटेड अगेन। सर कुल कितने मेंबर्स की आपकी टीम थे जिन्होंने ये वर्क को डन किया है और कितना टाइम आपको इसके लिए लगा सर करने में? राइट हम लोग जैसे बताया सुबह 9:30 पे यहाँ पर आ गए थे। काम एक्चुअली पानी के अंदर हमारा 1:30 दोपहर को शुरू हुआ था एंड बाय 10:30 वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट दी इनिशियल बंड। उसके बाद ऑफ कोर्स रात भर मेरी मेंटेनेंस टीम यहाँ पर लगी रही। सो तकरीबन 50 बंदे हमारे कंटिन्यूसली यहाँ पर डिप्लॉयड हैं जो इसको कंस्ट्रक्ट किया हमने, और फिर मेंटेनेंस टीम अभी आपके पीछे लगी पड़ी है यहाँ पर। क्योंकि सर जैसा आपको बता रहे हैं कि वाटर फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, तो क्या वो एक बड़ा ट्रबल मेकर बन रहा था आपके बीच में इस काम के लिए? बट ट्रेनिंग हमारी उसी के लिए है। सिक्योर होकर हमने पानी के अंदर एंटर किया एंड जो टास्क है वो तो अचीव करना ही है हमको। सर क्या मान के चले कि ये जो पूरा टास्क है अभी ओवर हो चुका है या इसमें कुछ और काम बाकी रह गया है? अभी हम इसका बस मेंटेनेंस करेंगे एंड हमने जो बताया आपको एक कंडीशन क्रिएट कर दिया है पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि अपना वो स्लुइस गेट को रिपेयर कर दें। जब तक हमारा रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पर डटे हुए हैं। Sir, I just want to know that what kind of work you have done here and what problem you are facing and what work you have done. All right, I'll just give a little background. Yesterday morning at around 9 to 9:30 hours, the army was requisitioned. Thereafter, my team was deployed here. We carried out our initial assessment and mustered our resources. After analyzing the situation, we came to a conclusion that there's a requirement of a bund just ahead of the sluice. So we mustered our resources and started our work at around 1:30 in the afternoon, and we were able to successfully construct a temporary bund by around 10:30 at night. So total around 8 to 9 hours we took to make the initial bund, and right now we are just improving on the bund which has been just been created. Now what this bund has done is prevented the inflow of the water which was coming from Yamuna towards the city, and now you can actually see the natural flow of the drain is back going towards the Yamuna. So we have seen a lot of the boosting pump here and who's removing the water here from the drain system, drainage. And sir, till now the work is done or it's still pending, sir? All right. Our task was to create conditions for PWD or the irrigation department to repair the sluice gates. Those conditions have been created. The flow of water from the Yamuna Nadi is now going towards. We can take that back. Pending work is done or still? All right. Our task was to create a condition for PWD to be able to carry on with the work of repair of these sluice gates. We have constructed the bund. The inflow of water from Yamuna towards the city has been successfully stopped from this particular area, and we are just improving the bund that has been created as of now, sir. Sir, I just want to know one thing more. How many members of your team to able to do this work, sir, and how much time you have taken, sir? Like I mentioned earlier, around 9:30 my team was here, deployed here, and till 10:30 in the night we continued to work on the bund, and the bund was successfully created by around 10:30 in the night. Thereafter, of course, my maintenance team were working overnight. And all in all, around 50 boys around the clock have been deployed here. So is this a big task for your team because the flow of the water is very high, sir? Is that making any trouble? It's part of our training. We are up and about it, and adequate safety and precautions have been taken so that the boys are not troubled, and the work has been successfully done in front of you, as we can see. Thank you, sir. Sir, while doing this work, have you faced any challenges or any trouble because the flow of the water is very high, sir, that time? So, what kind of problem you are facing? Yes, the flow of the water was high. The level of the water was also very high, but that is what we are trained for. And with adequate safety measures, you can see
that the bund has been successfully constructed by us, and now we are just doing the consolidation process. That is, we are just improving on the bund.